day in and day out. How would she take responsibility for that? The husband may be really really a sadist or an extremely arrogant person. So it's not easy to take responsibility there. That's the point. It's just a change of the word. To take responsibility is just a change of the word. The issue is understanding that. That's the point. Buddha's teaching is of understanding. Why is it happening? What is the reason? And that's a pretty difficult thing for a person who is not having the basic understanding of Dhamma. It's going to be very difficult. You can come out of unpleasantness by means, of course, but you can hold on to that suffering for the rest of the one's life. Yeah, that's what I'm saying actually. He can realize that now I've come out of that. How does one take responsibility for, say, I'm a very good girl, and my husband just tortures me. You read Isidasi's story, that story of so many girls today, and just tortures me left and right. How do I take responsibility for that? Tell me. Sir, I am saying when we say take responsibility, it is for when we come out of that unpleasant situation, then to realize that, to basically say that even if I live in this only life paradigm, am I going to live the rest of my life suffering from this past experience, or am I going to realize that if this can change and basically take responsibility for my own mental process? Yeah, how does one? So that's what I'm saying. Yeah, how does one take it if one doesn't have basic tools to do that? Of course, psychotherapy is one way. So there are then, I would say, of course, various tools. Very rarely find a person who can take responsibility of such a traumatic event. Of course. It's not possible. Of course. That's the point. So putting this, saying it is your responsibility to do so is actually cruel. I would put it in that way. It's lack of empathy. Okay, maybe there exists a better word than responsibility than might sound cruel. Yeah, that's true. I understand what you're trying to say. That it's not necessary. Of course, psychotherapy does work. It does take people out of trauma. There also, actually, it is confronting the reality. Same thing. Psychotherapy is a good psychotherapist is quite near the first noble truth. Okay, so just quickly, so वो जो अपने dependent origination के reverse cycle है, so from suffering it can either go to more suffering, है ना, वो तो clear है, जी, और it can go to freedom. अब उसमें तीन उसको कैसे समझने, वो तीन proximate causes हैं उसके, skillful conduct, faith and yoniso mansikar is depending on the personality of the person and the conditions which cause suffering, one can choose any of the ways. I see. So it's not three together, but either or some combination of the three. Combination of them. Maybe one. Somebody gets into faith, somebody gets into investigation. So, and somebody find out, yeah, mere sheeli ki problem thi yaar. And then works on that, develops strength, and the Sheila gets joy out of it. And then the main thing is to move from suffering to the next step of peaceful mind, joyful mind, and then carry on with the practice. The transition, that switch has to happen. और उसमें I was just thinking in the context of a particular situation कि उसमें वीर्य का क्या करना है भाई, अगर मैं ढीला पड़ा हुआ हूँ तो उसका क्या करना है यार? उसके तो in that situation obviously one has to see that the joy leads to virya. If one even gets a breakthrough,
अरे हाँ इस कारण से प्रॉब्लम हो रही है, that naturally I mean, usually leads to virya. नहीं नहीं नहीं, उसके पहले स्टेप पे, हाँ एट द suffering पॉइंट। है, if you understand suffering properly and you get a feeling, you know, that's why they say saddha and then virya. Saddha, virya, sati, samadhi, panya, the 5 faculties. Saddha आई leads to virya. I really understand, oh my God, this aspect of Buddha's teaching, I missed it out. how about considering, being a little blunt, that maybe the suffering isn't yet strong enough to bring about virya? Yeah, what do you say to something like that? The, the Kalyan Mitra can think like it, but it can't be said. But I mean, Yeah, is it possible? many people live with mild Hmm. meditations. Hmm. We have been living with mild meditations for all the time. Most of the time, we live with them. We don't take it seriously, isn't it? I In can some see senses वो things. सामान्य हो जाता है, हाँ, isn't it? ठीक है, चलता है. So mild reactivity is accepted. Yeah, right. I can see it in myself. Yeah. Okay, very good. Very last thing, huh? It's a totally different thing. ये जो आप आनापान सती के जो the way you have taught it, now that's one way to um, see, especially the first 4 instructions. उसमें जो और traditions में उस निमित्त की जो बात करते हैं about the appearance of a particular sensation under the nose, that's also the same sort of application of Thir Sanya, which here you are trying to use, breaking it into 3 parts. Is it more or less the same? Yeah, when we say focus attention here, when somebody has done it for a long period of time, then naturally the sensation here becomes so prominent. So what happens is the mind remains here, breath goes in, comes out, and breath stops. Breath begins to stop for large periods of time, 5 seconds, 10 seconds. During that time, this is available. So mind does not go here and there. So it becomes continuous awareness on the body. But you have not picked on that one, है ना? Hmm? आपने अपने उसमें इसको शामिल नहीं किया है. That's what I was. Yeah, I have not mentioned it, but I have intended to mention it during the retreat. Because when you practice intensely, then only you experience it. Or if you have been practicing for a long period of time, I usually experience it within a few minutes. And in this manner, there may be many other Yeah. sort of, है ना, isn't it? I was looking at some other So many this thing. people. Some people say this, some people experience light. Light, yeah, Then exactly. focus on that for long periods of time, and it continues. For some, light arises and then it does not continue. So it depends on really unknown past factors. Okay, thank you. Very sorry for the long digression. Thank you, Vanteji. सो आज हम वेनरेबल सोन की जो प्रसंग है वो कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट टाइम हमने देखा था वो जो बहुत एक वेल नोन एग्जाम्पल है कि हम एफर्ट को कितना एफर्ट हमें लगाना है। लास्ट टाइम दैट्स व्हाट द मेन थिंग वाज। टुडे ही विल इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ 6 फैक्टर्स which we can then discuss. So, Nikhil. Definitely. So I'll start from here. Yeah, that's right. अथ खो आयस्मतो सोणस्य अर्हत्तपत्तस्य एतद्होषि यन्नूनाहं भगवतो सन्तिके अय्यं व्याकरणीयन्ति अथ खो आयस्मा सोनो येन भगवा तेन उपसङ्कमित्वा भगवन्तम् अभिवादयित्वा एकमन्तं निःसीदि
एकमन्तं निस्सिन्नो को आयस्मा सोणो भगवन्तं एतद्वोच योऽसो भन्ते भिक्खु अर्हं क्षीणासवो भूषितवा कतकर्णियो मोहितभारो अनुपत्तसद्दत्तो परिक्षीण भवसंयोजनो सम्मदन्या विमुक्तो सोचट्ठानानि अधिमुक्तो होति निखम्माधिमुक्तो होति पविवेकाधिमुक्तो होति अव्यापज्याधिमुक्तो होति उपादानक्षयाधिमुक्तो होति तणहंखयादिमुक्तो होति असम्मोहादिमुक्तो होति सियाकोपनिबन्धे इधे कच्छस्य आयस्मतो एवमस्य केवलं श्रद्धामत्तकं नून यस्मा निस्साय निखम्माधिमुक्तो इति न कोपनेतं भन्ते एवं दट्टभं क्षीणासवो भन्ते भिक्षुभूषितवा कथकरणीयो करणीयमत्तानन् असमनुपस्सन्तो कथस्य वापटिचयं खया रागस्य वीतरागत्ता नेक्षम्माधिमुक्तो होति खया दोषस्य वीतदोषत्ता नेक्षम्माधिमुक्तो होति खया मोहस्य वीतमोहत्ता नेक्षम्माधिमुक्तो होति श्रियाकोपनिबन्धे इत्थे कच्छस्य आयस्मतो एवमस्य लाभसत्कारश्लोकं नून अयमायस्मानिकायमानोपविवेकाधिमुक्तो इति न कोपनेतं भन्ते एवं दट्टभं क्षीणासवो भन्ते भिक्षुभूषितवा कथकरणीयो करणीयमत्तानन् असमनुपस्सन्तो कथस्य वापटिचयं खया रागस्य वीतरागस्ता पविवेकाधिमुक्तो होति खया दोषस्य वीतदोषत्ता पविवेकाधिमुक्तो होति खया मोहस्य वीतमोहत्ता पविवेकाधिमुक्तो होति श्रियाकोपनिबन्धे इद्धे कच्छस्य आयस्मतो एवमस्य शीलब्बत परामासं नून अयमा यस्मा सारतो पच्छा गच्छन्तो अव्यापज्यादिमुक्तो इति न कोपनेतं भन्ते एवं दट्टभं क्षीणासवो भन्ते भिक्षुभूषितवा कथकरणीयो करणीयमत्तानन् असमनुपस्सन्तो कृतस्य वापटिचयं खया रागस्य वीतरागत्ता अव्यापज्याधिमुक्तो होति खया दोषस्य वीतदोषत्ता अव्यापज्याधिमुक्तो होति खया मोहस्य वीतमोहत्ता अव्यापज्याधिमुक्तो होति खया रागस्य वीतरागत्ता उपादानक्षयाधिमुक्तो होति खया दोषस्य वीतदोषत्ता उपादानक्षयाधिमुक्तो होति खया मोहस्य वीतमोहत्ता उपादानक्षयाधिमुक्तो होति खया रागस्य वीतरागत्ता तण्हङ्खयादिमुक्तो होति खया दोषस्य वीतदोषत्ता तण्हङ्खयादिमुक्तो होति खया मोहस्य वीतमोहत्ता तण्हङ्खयादिमुक्तो होति खया रागस्य वीतरागत्ता असम्मोहादिमुक्तो होति खया दोषस्य वीतदोषत्ता असम्मोहादिमुक्तो होति खया मोहस्य वीतमोहत्ता असम्मोहादिमुक्तो होति एवं सम्मा विमुक्तचित्तस्य भन्ते भिक्खुनो भुषा चेपि विज्ञेया रूपा चक्षुस्य आपातं आगच्छन्ति नेवस्य चित्तं पर्यादयन्ति अम्मिस्सिक तमेवस्य चित्तं होति ठितं आनिन्याजपत्तं वयं च सानुपश्यति भुषा चेपि श्रोतविज्ञेया सद्दापे घ्राणविज्ञेया गन्धा जिह्वा विज्ञेया रसा कायविज्ञेया पोटवा मनोविज्ञेया धम्मा मनस्य आपातं आगच्छन्ति नेवस्य चित्तं पर्यादयन्ति अम्मिस्सिक
नेवस्य चित्तं होति ठिठं आने धियपत्थं वयं च सानुपස්සति संयथापि भन्ते सेलोपब्बतो अछिद्दो असुशिरो एकघ्नो पुरथिमाय चेपि दिशाय आगच्छेय भूषा वातिमुठी नेवनं संकं संकम्पेय न संपकम्पेय न संपवेधेय पश्चिमाय चेति दिशाय आगच्छेय भूषा वातवुत्थि पे उत्तराय चेति दिशाय पे दक्षिणाय चेति दिशाय आगच्छेय भूषा वातवुत्थि नेवनं संकम्पेय न संपकम्पेय न संपवेधेय एवमेव को भन्ते एवं सम्मा विमुक्त चित्तस्य भिक्खुनो भुषा चेति चक्षु विज्ञेया रूपा चक्षुष आपातं आगच्छन्ति नेवस्य चित्तं पर्यादीयन्ति अमिस्य सीकतमेवस्य चित्तं होति त्रिटं आनीया जपतं वयं च सानुपස්සति भुषा चेति सोतविज्ञेया श्रद्धापे घानविज्ञेया गन्धा जिह्वा विज्ञेया रसा काय विज्ञेया पोटव्वा मनो विज्ञेया धम्मा मनस्य आपातं आगच्छन्ति नेवस्य चित्तं पर्यादीयन्ति अमिस्सी कतमेवस्य चित्तं होति ठिठं आनीय जपतं वयं च सानुपස්සतीति नेखं अधिमुतस्य पविवेकं च चेतसो अव्यापज्याधिमुत्तस्य उपादानक्षयस्य च तर्हङ्खयाधिमुत्तस्य असम्मोहं च चेतसो विश्वा आयतनुत्पादं सम्मा चित्तं विमुच्यति तस्य सम्मा विमुक्तस्य सन्तचित्तस्य भिक्खुनो कतस्य पटिचयो नत्थि करणीयं न विच्यति सेनो यथा एकघ्नो वातेन न सनिहति एवं रूपा रसा सद्धा गंधा फस्सा च केवला इट्ठा धम्मा अनिट्ठा च न पवेदेति चादिनो ठिठं चित्तं विप्रमुत्तं वयं च सानुपस्सतीति So, Saksham, would you like to read this? Yeah. He then thought, why don't I declare perfect insight to the Buddha? He then went to the Buddha, bowed, sat down, and said, Sir, a monk who is a perfected one, who has ended the corruptions, fulfilled the spiritual life, done the job, put down the burden, realized the true goal, cut the bond to existence, gained release by right insight. He is committed to 6 things: to renunciation, seclusion, harmlessness, the end of grasping, the end of craving, and non confusion. A venerable here might think, no doubt this venerable is committed to renunciation simply because of faith. But this would be the wrong way to look at it. The monk who has ended the corruptions, who has fulfilled the spiritual life and done the job, doesn't see anything to be done in himself, nor anything that needs improving. He is committed to renunciation because of the ending of sensual desire, because he is without sensual desire. He is committed to renunciation because of the ending of ill will, because he is without ill will. He is committed to renunciation because of the ending of confusion, because he is without confusion. A venerable here might think, no doubt this venerable is committed to seclusion because he desires material support, honor, and praise. But this would be the wrong way to look at it. The monk who has ended the corruptions, who has fulfilled the spiritual life and done the job, doesn't see anything to be done in himself, nor anything that needs improving. He is committed to seclusion because of the ending of sensual desire, because he is without sensual desire. He is committed to seclusion because of the ending of ill will, because he is without ill will. He is committed to seclusion because of the ending of confusion, because he is without confusion.
A venerable here might think, no doubt this venerable is committed to non-harming because he falls back on adhering to virtue and vows as the essence. But this would be the wrong way to look at it. The monk who has ended the corruptions, who has fulfilled the spiritual life and done the job, doesn't see anything to be done in himself, nor anything that needs improving. He is committed to harmlessness because of the ending of sensual desires, because he is without sensual desire. He is committed to harmlessness because of the ending of ill will, because he is without ill will. He is committed to harmlessness because of the ending of confusion, because he is without confusion. He is committed to the end of grasping, to the end of craving, to non-confusion because of the ending of sensual desire, because he is without sensual desire. He is committed to the end of grasping, to the end of craving, to and to non-confusion because of the ending of ill will, because he is without ill will. He is committed to the end of grasping, to the end of craving, and to non-confusion because the ending of confusion, because he is without confusion. Sir, for a monk who is fully freed in this way, even if he sees compelling sights, his mind is not overpowered by them. It remains unaffected, steady, and unshakable, and he observes its disappearance. Even if he hears compelling sounds, smells compelling odors, tastes compelling flavors, touches compelling objects, or experiences compelling mental phenomena, his mind is not overpowered by them. It remains unaffected, steady, and unshakable, and he observes its disappearance. It's just like a granite mountain, a single solid mass without cracks. It doesn't shake or tremble when a powerful rainstorm arrives from any direction. The mind of the monk who is fully freed in this way is just like that. For one committed to renunciation and to seclusion of the mind, for one committed to harmlessness and to the end of grasping, for one committed to the end of craving and to mind, clarity of mind, having seen the arising of the senses, their mind is fully freed. For one who is fully freed, the monastic with a peaceful mind, there is nothing to improve and nothing to be done. Just as a single solid rock is unshaken by the wind, so too all sights, sound, smells, tastes, and touches, and mental objects, good or bad, cannot move that kind of person. Their mind is free and steady, and they observe it as it disappears. इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे ये मतलब हिंदी में या थोड़ा कि क्या क्या हुआ है ये पूरा मंत्री जी या सर एक्चुअली इस लिस्ट से मैं परिचित हूँ नहीं एक्चुअली, एंड आई वाज गोइंग टू आस्क रिक्वेस्ट मिस्टर धर टू मे बी स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट दिस लिस्ट. आई मीन व्यक्तिगत रूप से तो वो वर्ड्स वो क्वालिटीज क्लियर हैं, बट हाउ इट हाउ ही हैज पुल्ड इट टुगेदर आई एम क्वाइट अनश्योर. जी सर. सर अगर आप बता सकिए क्या इंसाइट उन्होंने डिक्लेयर किया है और इसको हम कैसे समझें? बेसिकली इनसाइट तो ये डिक्लेयर किया है कि राग द्वेष मोह खत्म हो गए, तो बाकी सब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं. एंड रेनंसिएशन के कई कारण हो सकते हैं, सेक्लूजन के कई कारण हो सकते हैं, हार्मलेसनेस के कई, इसी तरह से इन सब क्वालिटीज तो प्रोबेबली टू क्रिएट द टू रिमूव द wrong view about these kind of
good qualities. He's pointing out that these qualities emerge naturally from your mind when rag, dvesh, craving, aversion, delusion are not there. वो हर जगह उसके दूसरे एस्पेक्ट बता रहे हैं. जैसे रेनंसिएशन कोई समझेगा कि वो सिर्फ फेथ के कारण कर रहे हैं, सेक्लूजन वो इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग उनकी प्रशंसा करें, हार्मलेसनेस इसलिए कर रहे हैं कि भाई वो सिर्फ शील में अटक गए हैं, एंड ऑफ ग्रेस्पिंग इसलिए कर रहे हैं कि उनको कुछ और चाहिए. तो हर एक के केस में जो रॉन्ग व्यू है वो उसको समझा रहे हैं. मतलब जो मतलब रॉन्ग व्यू नहीं कहना चाहिए, जो प्रिवलेंट व्यू है, तो वो बता रहे हैं कि वो प्रिवलेंट व्यू अलग है और जो एक पूरी तरह से मुक्त है उसका व्यू, उसका वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है. इट्स नॉट, इज नॉट डूइंग इट आउट ऑफ सर्टन व्यूज बट आउट ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड. दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट. तो हर जगह उन्होंने लिखा हुआ ना, कोई अगर कोई रेनंसिएशन है तो कहेंगे इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ फेथ. इस तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है. इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट इट. देन देयर इज अनदर कि भाई ये सेक्लूजन पे इसलिए है कि ताकि इनको प्रेज मिले कि ये तो एकांत में रहते हैं तो बहुत अच्छे हैं. सो दैट मस्ट बी द प्रिवलेंट व्यू देयर एट दैट टाइम. एंड सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज नॉन हार्मिंग, कि भाई वो तो फिर शील में अटक गए हैं, कि वो शील को पालन कर रहे हैं, सिर्फ बाकी से तो कर नहीं रहे हैं, उसी को महत्व दे रहे हैं. सो दैट कैन बी अनदर रॉन्ग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. इस तरह ग्रास्पिंग की बात कर रहे हैं, भाई वो ग्रेस्पिंग को एंड इसलिए कर रहे हैं कि ना उसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, तो किसको ग्रेस्प करेंगे वो. सो ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए फुल्ली एनलाइटेंड पर्सन. शुरू में कहा था ना, ही वांट्स टू डिक्लेयर टू द बुद्धा his attained full enlightenment, so he's putting it in an indirect manner. सर जैसे ये नॉन हार्मिंग का तो रॉन्ग व्यू बता दिया कि कुछ लोग सोचते हैं कि केवल शीलबद्ध परामर्श की वजह से. उसके बाद का रॉन्ग व्यू क्या क्या है ये शायद डायरेक्टली नहीं बताया, सीधा नहीं फिर बताया, उन्होंने. या यहाँ पे नहीं बताया. यहाँ पे इन्होंने हाँ. कहा है कि वो बाकी की जो ग्रेस्पिंग एंड कर रहा है, हम्म. क्योंकि ग्रेस्पिंग का रॉन्ग भी ये होगा कि भाई बेचारा कि इस चीज से किसी चीज को उसने ग्रेस्प किया तो उससे दुख हुआ तो अब छोड़ दिया. नॉट विद, नॉट बिकॉज ऑफ, इट्स बेसिकली एंड ऑफ गिविंग अप ग्रास्पिंग बिकॉज ऑफ हेल्पलेसनेस. व्हेन यू वांट टू गेट समथिंग यू डोंट गेट इट, तो कहते हैं ना मजबूरी में, मजबूरी के कारण छोड़ दिया. बट नॉट, इज नॉट डूइंग इट आउट ऑफ दैट because what he wants cannot be obtained, but because he doesn't want anything. ओके सर. कई बार वीत ऐसा राग वीत मोह. चाहते हैं कुछ और नहीं मिलता तो क्या, छोड़ो यार, जाने दो. हम्म. So he's mentioning that all this real end of grasping, जो उपादान निरोध है, वो तन्हाक के एंड होने से राग दोष मोह समाप्त होने के कारण स्वतः ही ग्रेस्पिंग समाप्त हो जाती है. सर जैसे इसमें ट्रांसलेशन लिखा बिकॉज ही इज विदाउट इल विल, इसका पाली कहाँ मिल रहा है नीचे? जैसे इसमें है बिकॉज ही इज विदाउट सेंसुअल डिजायर, ये सारे सेंटेंस का वीतरागतता इसमें भी है, वीतरागतता. क्षय रागस्य बीज रागस्य, उपादान क्षय विमुक्तो होती, दोष क्षय बीत दोषता, उपादान क्षय अधिमुक्तो होती. उदाहरण इस रिपीटिंग दोस थिंग्स. नीचे कारण दोष के क्षय होने के कारण वो वीत दोष हो. इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑक्सीमोरन. इट डजंट नीड एक्सप्लेनेशन, बट somehow is putting it in that manner. केवल इन तीनों सेंटेंस में एक ही शब्द में अंतर यहाँ पर पड़ता है बस. असमोहादि मुत्तो यहाँ पर फर्क आ जाता है, यहाँ तड़हंखयादि मुत्तो आ जाता है, और यहाँ उपादान. बाकी तीनों कॉमन ही है. Yeah, because those qualities राग द्वेष मोह का समाप्ति तो कॉमन है ना.
Basically, they are all mentioning the outcome of ending of craving, aversion, and delusion. That's it. Now you can put it in so many words, so many, depending on the person's predilections, he tries to point out some things. So those are probably the situational aspects at that time, at that situation. हमारी लर्निंग तो ये है, जितना हम राग द्वेष मोह समाप्त होगा उतना will become steady, unshakable, जो आगे लिखा हुआ है, it remains unaffected, steady, unshakable. That's it. Then the external impingements don't shake us. That is what really is the essence of the practice. आपको सर ये अनुवाद सही दिख रहा है? आपको ये ये जो इंग्लिश अनुवाद है वो सही लग रहा है? क्योंकि उपादान खयादि मुत्तों को उन्होंने सेंसुअल डिजायर शायद कर दिया है, तड़हंग खया को उन्होंने विदाउट इलविल कर दिया होगा, और सम्मोहादि मुत्तों को विदाउट कंफ्यूजन। तो तीसरा वाला तो सही लग रहा है, लेकिन तड़हंग खयादि मुत्तों को विदाउट इलविल की बजाय विदाउट क्रेविंग लिखना चाहिए ना। पर इधर लिखा उपादान खयादि मुत्तों को शायद तड़हा के बाद जो उपादान आता है वो लिखना चाहिए था। इसे ये उपादान खाए विमुक्तो बिगलिंग में आ गया ना, इज कमिटेड टू एंड ऑफ ग्रास्पिंग। वो तो तीनों सेंटेंस में आया है सर, वो हाँ, तो तो ये तीनों में उपादान आया खाए है। विमुक्तो हर एक में है ना, नहीं है, इसमें committed नहीं to है, this. नेक्स्ट वाले में नहीं है। हाँ, इसमें देखिए वो उपादान तो नहीं है, लेकिन एंड ऑफ ग्रास्पिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ट्रांसलेशन का इशू है। ये भी तन्हा को भी कोई ट्रांसलेट कर दिया। या ये जब पढ़ रहे थे ना सक्षम, तभी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये या, कैसा हो रहा है। जी जी, यहाँ पे सिर्फ हर जगह पे नॉन कंफ्यूजन की बात है, असमोहादि अजमितो, कमिटेड टू नॉन कंफ्यूजन और नॉन डिल्यूजन। क्योंकि उसका राग और वीतराग हो गया तो ये है, दोष खत्म हो गया तो ये है, मोह खत्म हो गया तो ये है। दैट इज द ट्रांसलेशन। ठीक है सर। एसपी सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है। पहले तो एक जस्ट सुता जस्ट रिमेम्बर्ड, उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड लग रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स दैट इज अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव वन एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे बहुत कुछ कह गए हैं इन कुछ सेंटेंसेस में, एंड वेरी ब्यूटीफुली सेड। उसमें उस सुता में भगवान ने बोला है कि जो अटैचमेंट्स हैं उसके 3 बेसिस होते हैं, एक सेंशुअल प्लेजर्स, दूसरा फॉर्म और तीसरा फीलिंग्स। तो उससे कुछ कुछ रिलेटेड लगा मुझे, although that's a more restrictive domain of discussion. But the more important question at this time for me is, this is for somebody who has attained what had to be attained. So suppose we were to use this as a guideline for practice. So would the guideline be that whatever compulsive things we might face in the domain of sensual pleasures, we should not let our attention take us there easily. Our restraint should be strong. Would that be a good way of understanding the practice flowing out of this? Maybe I would put it that our whole attention should be on dispelling raga, dosa, and moha. Okay. That is the commonality between all of them. So these will then come by themselves. Yeah. These are not kind of guide. I mean, may not be very useful as guidelines for practice. Yeah, because the roots को remove करना है ना, greed, hatred, and delusion, they are the root sankharas, जिससे बाकी सब चीजें आती हैं. Sensory restraint का ना होना, greed is the fueling of that usually.
So when we talk of the eliminating the root, because we're talking of uprooting the sankhara, so then attention is given to the roots, जो 3 unwholesome roots, lova, dosa, moha, as it is said. Right, sir. Thank you. इन सर कई बार ये जो भिक्षु का सुनते हैं ना तो माइंड थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करने में मुश्किल करता है। मैंने पहले भी आपको कहा था एक बार कि ऐसे उस समय कितने स्ट्रिक्ट थे कि वो जमीन में पड़े हुए वस्त्र उठाते थे, उनको सिल के पहन लेते थे, या फिर वो जंगल में जाते होंगे तो उन्हीं वस्त्रों को पहने हुआ उधर तो मच्छर मक्खी ये सब होते हैं, तो उनके पास कुछ तो भगवान बुद्ध की जो पावर होती होगी, नहीं तो मलेरिया वगैरह कितना हो, मतलब हाउ डू दे and how do we listen the so glorified stories that they go and they are successful despite of these restrictions. So काफी सुन के अच्छा भी लगता है और माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता कि उनके पास शायद कुछ तो, जिसको मैं, आप डांटते हो मेरे को, ग्रेस ग्रेस वर्ड लगता है मुझे कि उनको कुछ मिल गई है कि वो जंगल में जाके और वो इस प्रकार के वस्त्र पहन के ध्यान कर रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, एंड दे आर रिकवरिंग, दे आर गेटिंग अरहंतशिप. So just, I don't know. I mean, how does it happen? आप म्यूट पर हैं सर. Sir, you are not audible. Sir, आप अच्छा. I said maybe Banteji can reply because we have heard, listened to similar things in stillness flowing also. No? I'll have to log out from here. I've logged in from the other side. So I'll log out from here. Because stillness flowing में भी तो ये सब चीजें पढ़ी थी हमने कि जान चाह के बारे में या जान मन के बारे में, they all lived like that. The only medicine was the fermented urine, either of the cow or of your own fermented urine. That's the only medicine. And many survived, many did not. So maybe Banteji can answer it better. I mean, actually, my own attitude towards this is more क्या कहेंगे, मेरी दृष्टिकोण से that's not really the point, But anyway, yeah, I'll try and I mean, एक तरीके से तो हम इस तरह से देखें कि it's also a product of the time. ऐसा नहीं है कि वो कपड़े का फॉर एग्जाम्पल जो है, इट्स नॉट लाइक, आई मीन क्लॉथ वाज सो रेयर, है ना. सो क्लियरली जो ये रिनंसिएट प्रैक्टिसेस हैं, ये सभी ट्रेडिशंस में रिसोर्सेज जो मुश्किल से मिलते हैं उनको कंजर्व कर रही हैं. इनफैक्ट ऐसे भी तो ट्रेडिशंस हैं जिसमें बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहन रहे हैं, एंड सिमिलरली विद मेडिसिन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड तो वो कंडीशंस कुछ हद तक तो खैर मदद करती हैं ऑब्वियसली निष्क्रमण की तरफ. और अभी भी यही कोशिश है ना कि यू कीप योर लाइफ जितनी हम सिंपल रख सके उतनी रखें, ताकि जो मूल चीज़ है उस पर हम फोकस कर सकें. So that's how I would see it. Well, obviously the presence of a Buddha makes a difference, but as you understand, जैसे कि हमें पता है, there is no concept of grace. In fact, देखा जाए तो ग्रेस और जो कर्म विपाक है वो लगभग एक ही चीज हम उसको समझ सकते हैं. बट या द प्रेजेंस ऑफ द बुद्धा और एनीबडी विद स्ट्रॉन्ग, जिसका मन बहुत स्थिर है, वो तो अभी भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना. जैसे सक्षम उस दिन कह रहे थे, मैं जब आपके मिस्टर धर को जब मैं आपके साथ हैदराबाद में आके बैठा तो बहुत स्थिर हो गया. वो व्हाट इज दैट? यू कैन से इट इज हिज ग्रेस और यू कैन से दैट
आप किसी भी जो आपकी सराउंडिंग्स है उसका एक असर पड़ता है, बट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं। तो परिस्थितियाँ कुछ हो सकती हैं, एंड देन इट रियली डिपेंड्स के मैं किस तरह से, हाउ, कितनी मेरी समझ है और मैं किस तरह से एफर्ट लगा रहा हूँ। So you can have very conducive conditions but make no progress at all. Similarly, remember, just by conditions being difficult, progress is not guaranteed. है ना? So I think we उतनी हम समझ रख सकते हैं कि कंडीशंस का कुछ असर पड़ता है, श्योर। वो तिक पठान में भी आता है, ऋतु का भी असर पड़ता है, एंड सो फोर्थ। बट प्रिंसिपल ट्रेडिशन तो हमारा श्रम का है ना, दैट इफ वी मेक एन एफर्ट in the right direction with the right guidance, then we can make progress. I don't know if that addresses the point, but that's really how I see it. जी बनती थी, या इट समहाउ लिटिल बिट मेक सेंस टू मी। एंड रेंदर जी, आपने भी हैंड रेज किया था। मैं बेसिकली ये बात करना चाह रहा था कि human being has been put to a great stress right from the when we see the historical background, and हमारे वैदिक काल में भी जो तपस्या होती थी तो लोग निर्वस्त्र भी होते थे और बैठे रहते थे। और जैन, जैसे अभी बताया भंते जी ने, कि जैनियों में तो है ही प्रथा, दे दे आर, जैसी वो तपस्या करते हैं वो तो बहुत ही हार्डकोर तपस्या है, जिसको फिर मिडिल पाथ बनाया गया। बट इट्स ऑल इन द माइंड। मुझे लगता है कि कई मैंने ऐसे देखे हैं, एक बार मतलब कश्मीर के अंदर मैंने देखा है कि बर्फ पड़ते हुए वहाँ साधु बहुत आया करते थे किसी जमाने में। तो बिल्कुल बर्फ पड़ रही है और उनके बदन पे एक सिर्फ जस्ट एक कपड़ा उन्होंने लपेटा हुआ अपने बदन पे, नथिंग इज हैपनिंग टू देम। और हम जो है पूरे सूटेड बूटेड और गरम गरम कपड़े पहन के, हमारे को हाथ में भी ठंड लग रही थी। तो ये आई थिंक द बॉडी अल्टीमेटली जो जिसकी जितनी तपस्या होती है उसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। और उनको उस समय, क्योंकि नॉलेज जो नेचर के बहुत करीब होने से, उनको ये भी समझ समझ जरूर होगी कि किस दवाई का, मतलब किस मिश्रण का इस्तेमाल वो करें, किन प्लांट्स का इस्तेमाल करें, कुछ लेपें अपने शरीर के ऊपर, जिससे कि उनको इस तरह की कोई दुविधा ना आए। इस तरह का मुझे ऐसा लगता है कि दिस वुड हैव बीन, क्योंकि अदरवाइज ये सब तो हो ही नहीं सकता था ना, जैसे हम देख रहे हैं आज। दिस इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज। और बिल्कुल भंते जी ने कहा कि कपड़ों की तो उतनी कोई फैक्ट्रियां तो थी नहीं, तो ऑल हैंड वूवन, तो बहुत ही रईस लोगों के पास ही कपड़े होते थे उस समय तो। जी जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू भंते जी। सो इफ देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस। ठीक है, भंते जी से निवेदन है आप इस सेशन की क्लोजिंग के लिए। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब धर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। ऑल्सो जस्ट बिफोर आई क्लोज, जस्ट टू रिमाइंड एवरीबडी, आज शाम को जॉन मुनिंदो हमारे साथ होंगे। सो हैव अ आवर लॉन्ग Q&A विद हिम। सवाल तो सबमिट हो चुके हैं पहले से, बट जैसे कि आप जानते हैं, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी उस सवाल के संदर्भ में फॉर अ डिस्कशन एंड फॉर फॉलो अप क्वेश्चन। सो एवरीवनस इनवाइटेड टू जॉइन इन। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादन्। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि।
सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। भंत जी को भी 3 बार सादर नमन। प्रथम नमन, द्वितीय नमन, तृतीय नमन। Thank you everyone for joining. Have a nice Sunday. Okay. थैंक यू। Thank you. Namaste.